हेलो नमस्कार वणक्कम माय नेम इज टी एस सुधीर एंड यू आर वाचिंग योर ओन डिजिटल क्लासरूम स्टडी विद सुधीर। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए कि क्या आपको करना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक जेईई, नीट, क्लैट, सीए, एनीथिंग, राइट? बिकॉज आपका अटेंशन उसमें भी लगा रहता है, तो आपको कितनी मेहनत और कितना टाइम डिवोट करना चाहिए अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देयर विल बी स्पेशल फोकस ऑन आईएससी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर की स्ट्रैटेजी। व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स टेम्पेस्ट, Echoes and Reverie, and the same thing will apply more or less the same to class 11 students who are studying Macbeth, Prism and Rhapsody. And many of you have been asking which would be the best PYQ book as far as class 12 ISC is concerned, कि कौन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की किताब हमको लेनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले 5 साल की किताब आपके लिए काफी है। यू डोंट नीड टू गो बैक टिल 2010-11 काइंड ऑफ थिंग, उतना पुराना जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट 5 years बिकॉज दे आर मोर मॉडर्न, मोर इन सिंक विद आज का क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, बिकॉज इन द पोस्ट कोविड एरा काफी फेरबदल किए गए हैं एज फार एज क्वेश्चन पेपर्स आर कंसर्न। लेकिन जहां तक लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल है, आपको पीवाईक्यूज को देखने की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का अप्रोच रहता है जहां तक क्वेश्चन पेपर्स का सवाल है, राइट? सो देयर विल बी a recommendation from SWS on the best PYQ book. Also, there is going to be a big surprise also. Okay, so stay with the video if you want to know that surprise, what that big surprise is going to be as far as ISC class 12 students are concerned. So all this packed into this short video. So big surprise in this video. So मेरा कहना यह है कि आपको every day if you are preparing for other competitive examinations, उसके बावजूद devote at least 2 hours every day to the exam syllabus. And this time, according to me, should be ideally after you come back from school, you have had your lunch, you have had a bit of rest. उसके बाद 2 घंटे का समय, बिकॉज आप उसी टाइम जोन में रहते हैं, आप उसी मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, तो आप उसी सब्जेक्ट्स को 2 घंटे और पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी रिटेन करने में, राइट? अगर आप सुबह या शाम को या देर रात को पढ़ेंगे तो तब तक एक गैप हो जाता है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विच बैक. You are in the same mood as in the school. It's better to continue for 1 or 1.5, 2 hours with the exam syllabus of your board examination. That's something which you should do daily. This is my suggestion. According to me, this will be the best utilization of time. See, समय सबके पास वही है, 24 घंटे ही हैं. आपके पास है, आपके दोस्त के पास है, जो एग्जाम में टॉपर आता है उसके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास 24 घंटे ही हैं. ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा टाइम मिला है, ऐसा नहीं है. How well you use your time is the key, right? So that's what you need to do. और ये जो डेली टाइम टेबल बनाने का सिलसिला होता है ना, it's all about when to study what in order to ensure कि आपका focus and concentration 100% उसी चीज पर रहे. That's why it's good to study early in the morning, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, शांत होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है. Early morning time between 4 and 6 is a great time to study, right? रात के टाइम you can study after everyone has gone to bed if you think you are more energetic at that time. But होता यह है कि that if you have had a very tiring day, then your mental fatigue factor also kicks in the sense that, you know, अगर दिमाग में थकावट हो तो सेम चीज को रिटेन करने में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है, राइट? द टेम्पेस्ट कोर्स ऑफ कोर्स इज ऑन SWS, जिसमें कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स दिए हुए हैं Echoes और Reverie के for the students who are enrolled into this course. So Tempest course along with notes and question papers, MCQs, reasoning questions and the long format, all that is there on the Tempest course. But the Tempest has also been done on the YouTube channel. पहले किया था. Echoes and Reverie के सारे videos free हैं on the YouTube channel, so you can make use of that. So there is all that material is available on Study with Sudhir YouTube channel. Okay. English language के भी सारे videos YouTube channel पर हैं, इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स के काफी सारे वीडियोस किए गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के किए गए हैं, एसेस कैसे लिखने हैं, प्रपोजल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस याद नहीं है, फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, एवरीथिंग इज देयर ऑन द चैनल. ओके, सो व्हाट मेन थिंग यू नीड टू डू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वांट टू काइंड ऑफ गेट थ्रू दिस फास्ट.
मल्टीपल रीडिंग्स, अगर आप समझते हैं कि एग्जाम के 2 दिन पहले आप टेम्पेस्ट की किताब उठा के पढ़ेंगे एंड डिस्कवर करेंगे ये प्रॉस्पेरो भला कौन था, देन यू आर मेकिंग ए बिग मिस्टेक. एवरी डे अलॉट जस्ट 30 मिनट्स टू डूइंग एनी चैप्टर और एनी सीन ऑफ शेक्सपियर टेम्पेस्ट एवरी डे. आधे घंटे का समय लगा दो इन ऑर्डर सो दैट यू नो यू आर फेमिलियर. आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, कौन से एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कहां किया गया है, हाउ डज प्रॉस्पेरो एड्रेस एरियल, वो सब अगर लिखा है तो आपको आसानी होगी बाद में लास्ट मिनट पे ये मत कीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मल्टीपल रीडिंग्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज टेम्पेस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स play, as you would have realized in class 11. How to prepare for MCQs and reasoning questions. Now, the best way to do is to kind of note the details because MCQs में आपको डिटेल्स के बारे में ही पूछा जाएगा कि इस सीन में ये क्या हुआ, स्टीफेनो ने ट्रिंकुलो को क्या कहा या कैलिबर ने स्टीफेनो या ट्रिंकुलो को क्या कहा, right? So you need to know the intricate details. So when you are reading, be 100% on that island of the Tempest or any poem or any story, whether it is Dover Beach or Story of an Art that you are studying. Note the details. अपनी बुक को पेंसिल से हर जगह लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नोट कीजिए ताकि आपको एमसीक्यूज में आसानी हो. रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए? Everything that you see, every passage that you study, for example, any study, let's say Wordsworth, B. Wordsworth, आप जो भी पैराग्राफ पढ़े उसमें देखिए कि इसको किसी तरह से बिकॉज की तरह, रीजनिंग क्वेश्चन की तरह इसको ट्विस्ट किया जा सकता है या नहीं. So keep doing that exercise yourself. You will realize over a period of time that you are getting better. You will be able to predict questions which will come in the examination instead of relying on workbook. Workbook आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही अपने आप को constantly make reasoning questions for yourself, this process will become that much easier for you in the examination. So keep, you know, this is why Prospero said this to Ferdinand, because this is why Miranda said this to Ferdinand, because this is why Mrs. Mellard behaved like this, because so if you kind of constantly get into that reasoning questions mode, you will find your path that much more easy. So khud hi kafi kijiye. Now let's come to the previous year question papers. Why is it important? Because you get familiarity with the format. किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं? Yes, there could be some फेरबदल, लेकिन आपको जनरली एक आइडिया मिल जाएगा कि एकोस एंड रेवरी और टेम्पेस्ट में से किस तरह के क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं और उसी पैटर्न में ही लार्जली रहेंगे. The changes are there, especially with respect to the word limit. So as far as the previous year question papers are concerned, I am recommending the Oswal ISC previous year 2018 to 2023. ये 5 साल के हैं because 2021 में तो एग्जाम नहीं हुए थे. So ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं solved. These come in 3 different versions. One is PCB, ये PCB वाली किताब है, PCM and Commerce. Okay, और PCB में for instance there is Physics, Chemistry, Biology, Hindi, Computer Science and English Language 1 and English Language and English Literature papers. So 7 papers के 5 years के solved papers हैं इसमें. The advantage with something like this, which is why I'm recommending this, that you should buy. This is for 499 rupees. I think the price of Commerce and PCM may vary a bit. One, it will help you in revision. That's very obvious. As I was going through the book, it's very obvious that it will help you in revision because all the solutions will be provided. Then, wherever there is a problem with you understanding the concept itself, especially in subjects like physics and chemistry, you will have explanations given, so that will help you in clarity of the concept itself. Then obviously it helps you prepare for the examination because you know, okay, 2020 में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, this was a googly question, so I need to prepare it better because something like this could come and you could yourself work out different variations of the question that came, let's say in 2020 or 22 or 23. So this will really help, and especially 22 or 23 के क्वेश्चंस पर आप ध्यान ज्यादा दीजिए because तब से ही MCQs and reasoning questions क्लास ईयर 23 में इंट्रोड्यूस हुए थे. सो उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए. नाउ फॉर द सरप्राइज पैकेज, ये तो हो गया व्हाई आई थिंक यू शुड बी बाइंग दिस बुक, बिकॉज ओसवाल का स्लोगन है, एंड आई थॉट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्लोगन, दैट दिस इज द ओनली बुक दैट यू नीड टू विन द बोर्ड्स. ओके, इन ऑर्डर टू, दिस इज द लास्ट माइल प्रिपरेशन, कि आपकी कितनी तैयारी है उसको टेस्ट करने के लिए ये काफी काम आएगा, इन एडिशन टू व्हाटएवर क्वेश्चन बैंक्स दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन. बट ये PYQs की किताब होना जरूरी है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, SWS in association with Oswal Books, is to give away
50 copies of this book free of cost to first come first give basis, right? तो द फॉर्म रखा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरा लिंक है फॉर एनीवन हु वांट्स टू बाय, जो कि इस 50 में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप पहले 50 में हैं जिसने की फॉर्म भरा हुआ है, उसके बाद फॉर्म लॉक हो जाएगा। जिसने भी फॉर्म पहले भरा है और आपको आईएससी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, 11th क्लास के लिए नहीं है। ओके, सो उस फॉर्म को भरिए, यू विल गेट ए फ्री कॉपी ऑफ पीसीएम, पीसीबी या कॉमर्स, जो भी आप मेंशन करें, ये किताब आपको मिल जाएगी। इट विल बी कुरियर टू यू। ओके, सो दैट इज द गिव अवे। इसके बाद 10th क्लास के लिए भी आने वाला है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। सो दिस इज द बिग वन। सो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्रेस ऑन द लिंक एंड fill in the form. Otherwise, you can always purchase the book. I think it's a good investment. Now, let's go further on. The long format answers. Now, इसमें काफी दिक्कत होती थी कि कितना लिखना है और कैसे प्रिपेयर करना है। I will give you 2-3 points which you need to bear in mind. One, ensure that you already have the thematic analysis points ready with you. For example, in Tempest, the theme of forgiveness, the theme of reconciliation, the theme of revenge, the theme of romance, the theme of the colonization of the island by Prospero. All those things you need to keep ready so that exam के time पे आपको points बैठ के आप ऊपर fan को देख के सोच नहीं रहे हैं, right? So all those points keep it ready beforehand along with the keywords, key codes कि क्या-क्या points आपको mention करने हैं. Character analysis, again I'm giving you examples of Tempest because it's easier because different poems and stories for different होगा. लेकिन let's say a thing like Wordsworth, B. Wordsworth, for instance, the entire thing of life there, the character of the central protagonist, or in the case of Tempest, the characters of Prospero, Miranda, Ferdinand, the three guys, the villains, the antagonists, the mass scene, all those kind of things you need to keep it prepared beforehand because इसी में से questions आपसे पूछे जाएंगे। और इस बारी चूंकि एक word limit has been introduced, right? 100 to 150 words in case of 5 marks answer and 200 to 250। इसमें घबराने वाली बात नहीं है because इसका डबल आप लिखते हैं essay में। Essay is about 400 to 450 words, right? So this should not be a problem. What this does is that पहले ये होता था कि अरे 3 पेज का लिखना, 2.5 पेज का लिखना है, वो एक हवा बना होता था। Now you can be sure आपको 150 वर्ड ही लिखने हैं 5 मार्क्स के आंसर के लिए, आपको 250 वर्ड ही लिखने हैं 10 मार्क के आंसर के लिए। So there is clarity and it will really help you. 250 can become 260, 265, that's not a problem. But it should not ideally become 350 words, right? So stick to the word limit. It will make your job easy in order to approach the entire paper. In fact, let me see. For instance, this is the Tempest questions, right? Provide 2 details from the play to show the growing love between Miranda and Ferdinand when the former visits the latter. What are Prospero's feelings as he secretly observes the two? Now, what is this? He's obviously talking about Act 3, Scene 1, right? So, in a short paragraph, about 100 to 150 words is what is being asked. So, there are 2 parts of the question, right? 2 details यहाँ पे पूछा गया है, and then they are asking about what are Prospero's feelings. So, it is a focused question. It is not expecting you to write about last में जब वो chess खेल रहे हैं या पूरा फर्डिनेंड और प्रॉस्पेरो मिरांडा की लव स्टोरी के बारे में लिखने को नहीं बोल रहे हैं। दे आर आस्किंग यू स्पेसिफिकली विद रेस्पेक्ट टू अ सीन, व्हाट आर प्रॉस्पेरोस रीजंस फॉर प्रेजेंटिंग द मास्क, देन द मास्क सीन के बारे में पूछा गया है, एंड व्हाई डज इट एंड अब्रप्टली। सो यू नो इट्स अ पॉइंटेड क्वेश्चन। सो आपका जॉब एक्चुअली हैज बिकम दैट मच मोर इजियर एज कंपेयर टू द बैचेस इन द प्री कोविड एरा। Similarly, in the 10 marks question, now again they are asking you specifically with reference to Act 3, Scene 2 and asking about Caliban's plot to murder Prospero. So you have to talk about all the reasons he gives in order to justify why he wants to get rid of Prospero with the help of Trinculo and Stefano. So ये again 200 to 250. यहाँ पर Act 5 से explain what Prospero's reconciliation with his enemies and renunciation of his magic indicate about his character. This is again the whole theme of magic, the theme of Prospero's control over his craft. All that is something which you should prepare beforehand. So one thing I observed in the specimen paper, right? ये दोनों act, हालांकि ये Act 4 से है, Act 3, Act 3 और Act 5. So there is nothing which you can leave out. आप ये नहीं सोच सकते कि मैं Act 5 पढ़ के ही नहीं जाता हूँ, right? कि मैं ये चांस लेता हूँ. Well, it's a chance, like because यहाँ पे 10 मार्क्स में तो आपको चॉइस है, लेकिन इसमें
आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको दोनों 5 मार्क्स के अटेंड करने हैं, 5 + 5 10 + 10 तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको टेम्पेस्ट से। सिमिलरली इज द केस विद द echoes and reverie questions also. So this is what I wanted to tell you about what your approach towards preparation for literature, half an hour every day, how you should look at the reasoning questions, how you should observe the details. Like for instance, in many places, let's say for example, character A is annoyed with character B. The word used by the author is annoyed. तो आप उस annoyed को मार्क कर लीजिए, बिकॉज उसके इर्द गिर्द ही आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है. व्हाट वाज द सेंटिमेंट? वाज इट एन एलिमेंट ऑफ अनॉयंस? वाज इट एन एलिमेंट ऑफ सैडनेस? वाज इट एन एलिमेंट ऑफ इरिटेशन? वाज इट एन एलिमेंट ऑफ जुबिलिएशन? राइट. सो अगर आपको याद होगा द वर्ड यूज्ड बाय द ऑथर वाज अनॉयड, यू विल फाइंड इट इजियर टू आइडेंटिफाई. अदरवाइज आप अनॉयंस और इरिटेशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं. हालांकि उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यू शुड ऑलवेज यूज द वर्ड which has been used by the author himself or by Shakespeare himself. So what I'm saying is, the more times you read, multiple readings become that much more important for this specific reason. And long format के लिए whatever I said, just do it. आपको कोई मुश्किल नहीं होगी. Otherwise, if you are part of the Tempest course, all that is taken care of. But if you are doing self preparation, please do it this way, right? Look at all this, and if you are either winning among the first 50 to get this book, or if you are purchasing this book, please make a note of what all questions have been asked in the last 5 years. Prepare those questions, because uske aage bajo, there will be some kind of changes. You will be the same. Last point, agar aapse koi opinion based questions pucha jaye by chance kisi bhi chapter se, you can state your opinion, but it has to be backed by evidence from the text. That is important, right? It cannot be hawa mein baatein nahi kar sakte aap. आपको जो भी पॉइंट कह रहे हैं उसको आपको एविडेंस देना पड़ेगा फ्रॉम द टेक्स्ट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू जस्टिफाई कि आप जो पॉइंट बोल रहे हैं उसका एक तरह का देयर इज अ बिट ऑफ एविडेंस इन द टेक्स्ट की इसके बेसिस पर ये कैरेक्टर ने इस तरह से बर्ताव किया होगा. ही वुड हैव बिहेव्ड इन दिस पर्टिकुलर मैनर बिकॉज ऑफ this which happened in the story, or what he said, or what the other characters said in the story. So it has to be backed by evidence. It cannot be just your opinion backed by evidence from the text. Okay, so that's as far as the approach to the ISC class 12 English literature paper is concerned. The same points would be more or less applicable even for ISC class 11 students. So fill up the form, and I wish you the best. I hope you are among the first 50 to win this book free of cost. Otherwise, it's an investment worth making. Okay, thank you very much. Tata, bye bye.